अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सेकंड ईयर के मिस्टर चिप्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले मैं आपको मिस्टर चिप्स के करैक्टर स्केच बता देती हूँ। इनके बारे में अपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। इन करैक्टर्स को आपने सबसे पहले याद करना है। तो सबसे पहले आपने मिस्टर चिप्स का करैक्टर कैथराइन का याद करना है, मिस्टर वेदरबाय का याद करना है, मिसेस विकेट का, डॉक्टर मैरीवेल का, लिनफर्ड का, रॉस्टन का, कोले का, जॉन रिवर का, कार्टराइट का, रोडन का, चैट्रस का, ग्रेसन का, मिस्टर मेल्ड्रम का, मेनॉर्ड का। ब्रुकफील्ड स्कूल के बारे में आपने याद रखना है। ब्रुकफील्ड स्कूल कब इस्टेब्लिश हुआ, कब कहाँ पे सिचुएटेड है। इसके अलावा आपने बरो, व्हाट डू यू नो अबाउट बरो, बरो के बारे में आपने पढ़ना है। रशलन के बारे में आपने पढ़ना है, फॉल्कनर के बारे में आपने पढ़ना है, फॉरेस्टर के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा रिजोल्ट के बारे में आपने पढ़ना है। सबसे पहले आपने करैक्टर स्केच मिस्टर चिप्स के सारे नॉवेल्स में जो जो करैक्टर्स आ रहे हैं आपने उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद आंसर मैं आपको बता रही हूँ। तो व्हाट डिड वेदरबाय एडवाइस मिस्टर चिप्स, मिस्टर चिप्स को वेदरबाय ने क्या एडवाइस की थी। और इसके अलावा वाई वाज स्प्रिंग 1896 इंपॉर्टेंट फॉर द मिस्टर चिप्स, मिस्टर चिप्स के लिए 1896 की जो बहार की थी वो क्या अहमियत रखती थी। वट नोशन चिप्स हैड अबाउट वुमेन्स। इसके अलावा हाउ मच वाज रॉस्टन पॉपुलर एंड रिस्पेक्टेड इन ब्रुकफील्ड स्कूल। वट वाज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रुकफील्ड स्कूल ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर I। इसके अलावा क्वेश्चन है व्हाट डिड कार्टराइट से अबाउट मिस्टर चिप्स चिल्ड्रन। हाउ डिड चिप्स वेलकम द न्यू कमर्स। हाउ डिड मिस्टर चिप्स मीट कैथराइन फॉर द फर्स्ट टाइम। डिस्क्राइब द डेथ सीन ऑफ द मिस्टर चिप्स। इसके अलावा ये क्वेश्चन कुछ स्पेसिफिक आपको बता रही हूँ, आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। डिस्क्राइब द मिस्टर चिप्स जोक विद द थर्ड कॉलम। डिस्क्राइब द कैथराइन tragic death. Who was Forrester? Why did Mr. Chips remember him? Who was Maynard? इसके अलावा what memories did Chips have about him? What tribute did Cartwright pay to Mr. Chips while announcing his death in school? Write a short note. आपने याद करना है ब्रुकफील्ड स्कूल का। Contribution to glory of England. Why could Roston not become popular? Describe Chips' routine on his joining Brookfield School as a teacher again. ये आपने क्वेश्चन अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसके अलावा why did Mr. Chips join Brookfield School again? Why was Mr. Chips called a jester? What administrator did Chatterus share with Mr. Chips? इसके अलावा what was the opinion of the Mr. Chips about views of Ibsen and Bernard Shaw? इसके अलावा how did Mr. Chips keep the voice normal during air raid? Political ideas आपने तैयार करने हैं कैथराइन के। What did Chips think about boards? What April Fool did Chips face? ठीक है, ये आपने क्वेश्चन अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। When did Chips fall ill? What was Mr. Chips' view about war? How did Mr. Chips measure his time? What did Mr. Chips do after the last bell of the Brookfield School or before time? Why did he not like Melbury? Why he left it? इसके अलावा why it was early to remember 1870? Who was Weatherby? तो Weatherby के बारे में आपको पता होना चाहिए कि Weatherby कौन था। What was punishment that Mr. Chips gave to the first Cole and what did he said to second Cole and third Cole? And what did Weatherby advise to मिस्टर चिप्स। ये क्वेश्चन जो मैं बता रही हूँ आपने इनको स्किप नहीं करना, बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। मिस्टर चिप्स रिकलेक्ट एट मिसेस विकेट। डिस्कस था अपने मोस्ट इंजॉइंग मोमेंट इन द नॉवल। अलावा डिस्क्राइब द फर्स्ट मीटिंग विद कैथराइन ब्रिजेस। हाउ डिड कैथराइन बिगेन टू लाइक चिप्स। व्हाट डिड चिप्स सी व्हाइल क्लाइंबिंग ग्रेट कैम्बल। When and why Chips go to the Lake District? How did Catherine Bridges look? And what was Chips' view about women? So what was Catherine's profession? Why did Catherine think of Chips initially? इसके अलावा आपने ये याद कर लेना है what did Catherine think of Chips when she first met him? ये क्वेश्चंस आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। Write a note on Brookfield School. What contribution did Brookfield make to England? Draw a character sketch of the Mr. Chips. Write a note on Mr. Chips as a teacher. Write an account of Mr. Chips' married life. What influence did Catherine Bridges exercise on Mr. Chips? Describe the first encounter between Mr. Chips and Catherine Bridges. इसके अलावा आपने ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से तैयार करना है। Quarrel between Roston and Chips and who was Roston? Write a note on Mr. Chips' humor. Camphor looked upon Mr. Chips as an institution, so Brookfield School. Draw a character sketch of Catherine Bridges. Write a short note on the Catherine Bridges ideas. इसके ideas आपने अच्छे तरीके से तैयार करनी है, स्पेशली पॉलिटिकल ideas. Brief note आपने याद करना है मिस्टर वेदरबाय, मिस्टर रॉस्टन, डॉक्टर मैरीवेल और मिस्टर मेल्ट्रम, मिस्टर चैट्रस, मिसेस विकर। तो इनके आपने ब्रीफ नोट याद करने हैं। हाउ डिड मिस्टर चिप्स स्पेंड हिज लास्ट डे? व्हाट मेमोरीज ऑफ कैथराइन हॉन्टेड मिस्टर चिप्स? हाउ डिड मिस्टर चिप्स मीट विद कैथराइन ब्रिजेस? What do we mean by spontaneous generations? Briefly describe करना है अपने डेथ सीन मिस्टर चिप्स का। How did Mr. Chips tool his first class?
Who was Mrs. Wickett? What were the activities of Mr. Chips after his retirement? What changes did the marriage bring in Mr. Chips? Why was summer of 1896 special, Mr. Chips? What were the political views? ये मैंने आपको बताया है मिस्टर चिप्स के क्वारल आपने याद कर लेने हैं रॉस्टन और मिस्टर चिप्स के. What types of the people were supplied by Brookfield School? Who was Merivale? What did he say about Mr. Chips' health? What was presented to Mr. Chips on his retirement? How did the death of Catherine change Mr. Chips? What was the Chips' will? What was the reaction of the parents on the quarrel between Roston and Mr. Chips? राइट अ ब्रीफ नोट आपने याद करना है मिस्टर चैटरिस का. डिस्क्राइब कर लेना है ब्रुकफील्ड स्कूल के बारे में और रॉस्टन कौन था. हाउ वाज द मिस्टर चिप्स इन द मैटर ऑफ द डिसिप्लिन. व्हाट डिड मिस्टर वेदरबाय एडवाइस मिस्टर चिप्स ऑन द डे ऑफ हिज इंटरव्यू. व्हाट काइंड ऑफ फेलो वाज मिस्टर वेदरबाय. हाउ डिड मिस्टर चिप्स मेजर हिज टाइम when he lived at Mrs. Wickett house. तो ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेने. सबसे पहले आपने इनके करैक्टर्स अच्छे तरीके से तैयार करने नॉवल के. तो करैक्टर्स मैंने आपको बता दिया. उम्मीद करती हूँ कि आपको मिस्टर चिप्स के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट समझ आ गए होंगे. आयमा महर को हैप्पी लर्निंग के साथ इजाजत दीजिए. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. नोटिफिकेशन का आइकन भी दबाइएगा ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती जाए. लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.